जय जगन्नाथ, जय श्री राम, सब्यसाची सर एंट्री प्लीज। गुड इवनिंग हरिहर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो एंड अलग पिला आसंतु इमीडिएटली हमें स्टार्ट कर दवा, ठीक अछि। सार्थक वॉइस ऑफ कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग हाय सर। लैपटॉप ऑन को दो। देन श्रावणी, अनुष्का कोडे गले हमर अलग पिला सबू जल्दी जल्दी जॉइन हो एंड हमें संगे संगे स्टार्ट करिया, ठीक अछि। बायोटेक्नोलॉजी दैट इज बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। काहे के हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़िया, बायोटेक्नोलॉजी रो एम कोन, तो यही सब विषय हमें क्वेश्चन डिस्कशन करिया। गुड इवनिंग, नमस्ते अभिप्सा, शुभस्मिता, रंजिता, गुड इवनिंग एवरीवन। आशीष 29 वाचिंग, जल्दी जल्दी शेयर करो एंड 40 पिला हे गले हमें इमीडिएटली स्टार्ट कर दवा। आ सब को सब भलो चलची, ठीक ठाक चलची। तो जो माने नुआ नुआ पिला हमर वाच करछंदी बा किछि जदी नुआ जॉइनिंग पिला अछंदी जो माने YouTube रे लाइव क्लास करछंदी, जदी से माने इंटरेस्टेड अछंदी ताले जो गूगल फॉर्म दिया होछि तळे ताको तुम फिल अप करिकि कांटेक्ट करि परिवो। एंड जो पिला माने हमर ऑलरेडी एडमिशन नै छथि ताको थारो भी रिव्यू नै परिवो। सिक्की सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियंका, अर्चिता, दीपांजलि, अनिता, सार्थक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सार्थक, तृप्तिमयी, अर्चिता, श्रद्धा किटू, आशीष, अंकिता, गुड इवनिंग श्रद्धा किटू, अंजलि, भूमिका, ए सर भलो चलची श्रद्धा, गीतांजलि। तो एबे सर आज लेट कोन पई, नेटवर्क इशू। तो वर्तमान पे 50 हो गले तो हमें स्टार्ट करिया एबे। तो चलो पीएनटा कोन है, तो चलो वेलकम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आरडीएनए इज कौन हो फर्स्ट क्वेश्चन। सौदामिनी, स्मार्ट क्वीन, डीपी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ए चिमेरिक डीएनए, हाइब्रिड डीएनए आरएनए, रिकॉम्बिनेंट ऑफ वेक्टर डीएनए एंड डिजायर्ड जीन ना बोथ ए एंड सी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले हमें काहा कोइ परिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए चंदन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए काहा कोइ परिया। चिमेरिक डीएनए ना हाइब्रिड डीएनए आरएनए ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर, भल से भाबी को कौन आंसर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, चिमेरिक डीएनए भी हमें कहि परियानी। चिमेरिक डीएनए भी हमें कहि परिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आल्सो चिमेरिक डीएनए एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड डिजायर्ड जीन। देखो हमें पढिथिले जदी कोनोसी गोटे डीएनए रो किछि गोटे पोर्शन को हमरो डिजायर जीन अछि बा डीएनए रो जो पोर्शन ता हमकु दरकार अछि बा जाका हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट बोली कहउछि, तो सेही पोर्शन को जदी हमें मॉलिक्यूलर सीजर बा मॉलिक्यूलर ब्लेड बा मॉलिक्यूलर कटोरी बा मॉलिक्यूलर कोदाळ सेथिरे जदी हमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटिकरी गोटे वेक्टर रे ऐड करूचे, देन ताको हम कोन कहउतले दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट ऑफ वेक्टर डीएनए एंड डिजायर्ड जीन कहि परिया एंड आल्सो चिमेरिक डीएनए भी कहि परिया। ताले कोन हबो डी। गुड आफ्टरनून प्रियांशु, सॉरी फॉर लेट, इट्स ओके। ताले बोथ ए एंड सी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें याको कहया दैट इज व्हेन आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट और द डिजायर्ड जीन attached with the vector DNA or the plasmid that is called as recombinant DNA, ठीक अछि। तो ये होछ हमरो recombinant DNA को नेक्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। Foreign DNA is also called as, foreign DNA is also called as vehicle DNA, passenger DNA, RDNA, vector DNA। foreign DNA, foreign DNA माने हमें जोटा कहउछे जीन ऑफ इंटरेस्ट बा हमरो डिजायर्ड जीन, तेटा कहउछे हमें foreign DNA। 54 वाचिंग, जल्दी जल्दी याको शेयर भी करता, आंसर दियो एंड शेयर करो। अलगा पिला माने बोधे बहुत सारा पिला आसी नांदी, सोई पड़छंदी। बोथ ए एंड सी। अनिता डी, परफेक्ट डी टा। पैसेंजर डीएनए स्वयं फॉरेन डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज, फॉरेन डीएनए बोले हम कहा कहया दैट इज द पैसेंजर डीएनए। फॉरेन डीएनए हम कहा कहया पैसेंजर बस, पैसेंजर डीएनए। एंड व्हीकल डीएनए में कहा कहया व्हीकल डीएनए अदरवाइज कॉल्ड एज वेक्टर डीएनए, ठीक अछि। मते को कि एनीवन व्हाट इज प्लाज्मिड, व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कोन,
ऑप्शन दउची दीटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लिनियर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया एनीवन हु कैन से व्हाट इज प्लाज्मिड फाइनली आंसर बी होबो श्रद्धा किटू का स्टाइल फाइनली बी आंसर होबो सर या राइट बी होबो देन व्हाट इज प्लाज्मिड प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लिनियर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्वयं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए यदि हमें बैक्टीरिया को देखिया तो बैक्टीरिया रो निजर ओन डीएनए को छाड़ी की गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए थाए ताकू हमें कहूचे कोन ना प्लाज्मिड आ मोस्टली प्लाज्मिड टाको यूज करा जाय फॉर द टैक्सी और फॉर द बस और फॉर द वेक्टर और फॉर द व्हीकल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 3 प्लाज्मिड आर a small circular DNA molecules found in bacteria and some other microscopic organism perfect so, अंजलि स्वाति प्रीति ज्योत्सना अर्चिता राकेश सुप्रिया श्रद्धा किटू दीप्तिमय भूमिका तृप्ति प्रियंका वॉइस ऑफ कृष्णा स्वाति पायल अंकिता तृप्ति अनुष्का चंदन स्वयं कौन आंसर प्लाज्मिड आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एटा हमें कॉलेज संगे संगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी double stranded circular DNA. Next question number 4. PBR322 is the most extensively studied plasmid DNA of E. coli, foreign gene, na recombinant gene. PBR322. PBR322 first मते को scientist PBR322 को discover करथिले. First question. Amazing Krishna welcome. PBR322. PBR322 रो जदि हमें देखिया को scientist Bolivar and B for Bolivar and R for Rodriguez. The मन रखिबो that is कृष्ण को वेलकम करो कृष्ण पूरा लेट रे that is according to the two scientists PBR322 B for Bolivar and R for Rodriguez and P for plasmid answer कौन बार टिके स्लो होची कि ना मोर स्लो चलची ओते होची आंसर है बोलिवर एंड रोड्रिगेज तो PBR32 is the most extensive study on plasmid DNA of E. coli आंसर ए परफेक्ट राकेश शुभस्मिता बढ़िया आदरता कोन क्वेश्चन हो रिकमेंडेड तो तुम जानिचो फॉरेन डीएनए बा जीन ऑफ इंटरेस्ट बा डिजायर जीन जानिचो जोटा तुमर दरकार एंड आंसर होची प्लाज्मिड डीएनए ऑफ E. coli तापर मते को इको आरआई इको 1 second इको आर आई इथरे ई स्टैंड्स फॉर कोन सीओ स्टैंड्स फॉर कोन आर एंड स्टैंड्स फॉर कोन एंड आई स्टैंड्स फॉर कोन इको आर आई रे जदी हमें दैट इज मानकर नोमेनक्लेचर करिया बा मानकर नेमिंग करिया इको आर आई जे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जदी आर नोमेनक्लेचर करिया ई फॉर कोन एंड सीओ फॉर कोन एंड आर फॉर कोन एंड आई फॉर कोन eco r1 by eco ri this is a restriction enzyme then e for जदि हमें देखिया आगो फर्स्ट देखिया व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम माने कोन तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जदि हमें सिंपली वर्ड रे कहिया सपोज दिस इज द बैक्टीरियोफेज कोन बैक्टीरियोफेज इज ए टाइप ऑफ वायरस तो इट इज ए वायरस जार ना हमें धरो सपोज देले बैक्टीरियोफेज तो सपोज बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियोफेज टा अफेक्टेड करछि काहा को ना सपोज बैक्टीरिया दिस इज द बैक्टीरिया तो जो बैक्टीरियोफेज बा जो वायरस जार ना होछि बैक्टीरियोफेज जेतोले बैक्टीरिया को अफेक्टेड करछि बा बैक्टीरिया को निजर जेनेटिक मटेरियल को एंट्री करछि बा बैक्टीरिया बॉडी को निजर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करछि तो सेतबेले बैक्टीरिया निजु को बंचिया पई बा दैट इज द फॉरेन डीएनए बा बैक्टीरियोफेज रो डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करिया पई गोटे एंजाइम रिलीज करे एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक अछि तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्तमान सुधा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 900 प्लस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रा डिस्कवर हे गलानी इस्चेरिया कोलाई राइट तो इस्चेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया रु आसीची दैट इज इको आर1 तो इस्चेरिया कोलाई आ भितरु जीनस के इस्चेरिया स्पीशीज के कोलाई तो जीनस रो फर्स्ट लेटर ई and species ro first data letter CO then R होची strain of the bacteria then I होची numbering that is को strain रो बाहर से 1 नंबर
ठीक अछि ताले इस्चेरिया कोलाई समस्त कोन ठीक अछि देन को मतलब फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोटा व्हिच इज द फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑप्शन दोची इको आर1 बाम एचआई साल आई ना हिंट 2 व्हिच इज द फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एनीवन स्वयं परफेक्ट फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन हबो 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बस सुप्रिया परफेक्ट वर्तमान पे जहां हमर इनसेट रे डाटा अछि वर्तमान पे सुधा 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो डिस्कवर करा सरिलानी एंड व्हिच इज फ्रॉम द 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया ठीक अछि sorry the fast restriction enzyme that is HIND2 and HIND2 is discovered from the bacteria Haemophilus influenza तो strictly मन रखिबो तम जदि क्वेश्चन पचारि जो प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बैक्टीरिया रो डिस्कवर कराइछि देन आंसर कोन हबो इट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो strictly मन रखिबो that is HIND2 is fast restriction endonuclease and that is described from the bacteria Haemophilus influenza ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑलरेडी तुम जानिथिबो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कोन एनीवन व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस गायत्री राकेश विनय स्मार्ट क्वीन शर्मिष्ठा स्वयं प्रभा सुप्रिया व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कोन व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस माने जदि हम गोटे डीएनए रो स्ट्रैंड को जदि 5 डैश रो 3 डैश एंड अपोजिट रे 5 डैश टू 3 डैश पड़िया सेम मतलब जेमति की लेवल माने अपोजिट साइड रे मैडम बस परफेक्ट मैडम लॉल देन अनदर वन इज लेवल देन ओडिया रे कटक तो इको आरआई जो सीक्वेंस रे काटे कोन जी ए ए टी टी सी उल्टा पडिले भी जी ए ए टी टी सी एंड तुम जानिचो दैट इज ए नाइट्रोजनस बेस टा कहा सो स्टैंड फॉर्मेशन करेवा कहा सो कॉम्प्लीमेंटरी टी सो एंड डी जी टा सी सो ए सब जानिचो तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेम इन बोथ साइड मलयालम एनसीईआरटी लव if the sequence of a nucleotide is the same as the reverse of the complement perfect same word is both तो echo array এটা very very important NEET रो previous year question echo r1 को तार recognition sequence कोन and is the most important मन रखिबो that is g a a t t c strictly मन रखिबो echo r1 रो recognition site कोन that is g a a t t c next question गीतांजलि सुप्रिया गायत्री तृप्ति सेम इन बोथ साइड सेम वर्ड द सीक्वेंस वन साइड सेम एज द कॉम्प्लीमेंटेड बढ़िया अछि समस्तिंगर आउ सब पिला कोड गले 66 वाचिंग नेक्स्ट चलो द फास्ट रेसिस्टेंस एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोली हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा सीडोमोनास ना जांथोमोनास लिपिका बी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्वाति जी ए टी टी सी सार्थक राकेश अंकिता परफेक्ट दैट इज आंसर कोन हबो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बा जोटा हम कहउचे हिंट 2 इज द फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्ट्रिक्टली मन रखिबो तापर मते को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एनीवन endonucleus and exonucleus भितर डिफरेंस कोन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड पायल कृष्ण कोन हबो एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर पायल एंड कृष्ण एंड फॉर रंजिता एंड अंकिता चंदन स्वाति अर्चिता प्रियांशु सर पीसीएम क्लास केते बळ पीसीएम क्लास तो चलची तमरो फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास तो चलची एंड ऑलरेडी मैथ क्लास भी उदित सरंकर चलची तमे देखि परिबो ई विद्यासागर क्लासेस रो तमे जाई करी प्लेलिस्ट को एंड लाइव सेशन को जाई कि तमे देखि परिबो ठीक अछि वॉइस ऑफ कृष्णा आंसर दैट इज कोन एक्सोन्यूक्लियस हम दैट इज कहया दैट इज it caught the DNA strand or it separate the nucleotide from the terminal ends endonucleus middle ru cut kari thae and exonucleus which separate the nucleotide from the terminal end right bas perfect तमु जदि गोटे सूता दिया हो एंड सूता जदि गोटे DNA हला आ सूता भितर गोटे गोटे गंठी जदि न्यूक्लियोटाइड हला
एंड तुमको गोटे कौंची दिया मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर ब्लेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो तुम जदि ताको कट कल terminal end ru that is called as nucleus and if you are cutting in between the that is middle रे जदि कट करजो that is called as restriction endonucleus ठीक अछि यार आंसर होची हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा तापर मते को तुमको गोटे डिजायर्ड जीन दरकार बा तुमरो जीन ऑफ इंटरेस्ट पाखरे पहुंचाबे तुमको फर्स्ट सेल वॉल को एंट्री करिया पड़िबो देन न्यूक्लियस भीतर एंट्री करिया पड़िबो तापर मते को इफ द सेल इज बैक्टीरिया सेल देन तुम को एंजाइम यूज करिवो टू एंट्री टुवर्ड्स द सेल बा सेल भीतर को एंट्री करिया पय जदि तुम गोटे बैक्टीरिया सेल दिया हिची एंड बैक्टीरिया सेल भीतर तुम गोटे जीन ऑफ इंटरेस्ट काढियार अछि बा बैक्टीरिया सेल रो डीएनए भीतर तुमरो गोटे जीन को डिजायर जीन को काढियार अछि देन तुम को एंजाइम यूज करिवो परफेक्ट lysozyme amazing krishna perfect that is lysozyme and if the cell wall is or if the cell is fungus cell then what type of enzyme you should use जदि तुमरो सेल टा अछि फंगस रो सेल देन तमे को एंजाइम यूज करिवो लिपिका स्वयं शर्मिष्ठा तृप्ति अंकिता प्रियांशु सौदामिनी lysosome is a cell organelle but lysozyme is a enzyme ठीक अछि आई थिंक टाइप मिस्टेक सौदामिनी आंसर तो भलो दियो एटा टाइपिंग मिस्टेक दैट इज lysozyme कोन हो काइटिनेज राइट काइटिनेज बा जदि हम जानि छे द सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन सो दैट फंगस रे सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया पे हमकु यूज करिया पड़िबो द एंजाइम काइटिनेज ठीक अछि सेमति हम जदि न्यूक्लियस भीतर को एंट्री करि गले एंड न्यूक्लियस भीतर हम जानि छे न्यूक्लियस इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनेली माने ता भीतर निजर ओन डीएनए थाए एंड निजर आरएनए भी थाए एंड आल्सो प्रोटीन भी थाए तो हमकु दरकार कोन ना दैट सपोज दिस वन इज द आरएनए एंड दिस इज द प्रोटीन बट हमकु दरकार ओनली डीएनए एंड डीएनए भीतर हम गोटे पर्टिकुलर पोर्शन को कट करबे अछि तो एई जो आरएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करिया पे बा आरएनए प्रोटीन को हटिया पे अलिया को हटिया पे को एंजाइम यूज करिया आरएनए को हटिया पे को एंजाइम फर्स्ट देन को प्रोटीन को हटिया पे दीपांजलि तृप्ति सौदामिनी जानि पाली एटा की टाइपिंग मिस्टेक बोली रंजिता अमेजिंग कृष्ण सुप्रिया गौरांग हिंट यू that is protease and RNase अंकिता परफेक्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करिया पे प्रोटीएज एंड आल्सो आरएनए को डाइजेस्ट करिया पे आरएनएस चलो तापर गोटे सिंपली क्वेश्चन मुझे तुम पचारिबी गोटे न्यूक्लियोटाइड कहा कहू ने क्रिएट पेंटोज सुगर and the phosphate group and the nitrogenous base and my question is गोटे पेंटोज सुगर रे केते नंबर कार्बन रे नाइट्रोजनस बेस विल अटैच in which number carbon the nitrogenous base like A, T, G, C will attach anyone एटा जे कहबो ताकू नाइट्रोजनस बेस पूरा गोटे बैग नाइट्रोजनस बेस गिफ्ट दिया हो को कि नाइट्रोजनस बेस A, T, G, C को एंड रे लागे बा पेंटोज सुगर को पोजीशन केते नंबर कार्बन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नाइट्रोजनस बेस 1 प्राइम सुप्रिया नाइट्रोजनस बेस ATGC कौन आंसर नाइट्रोजनस बेस 5 कार्बन सुगर और क्वेश्चन होची केते नंबर कार्बन रे 1 प्राइम केते जन का आंसर देखिया सिक्की 5th 1 और 3 1 3 5 9 5 odd position ठीक अछि दैट इज odd position ओके देन चलो नेक्स्ट restriction endonuclease is a enzyme for transcription molecular blade enzyme for replication na enzyme for transduction what is restriction endonuclease is a enzyme of transcription molecular blade कौन आंसर restriction endonuclease is a enzyme for transcription molecular blade enzyme for replication enzyme for transduction
Obviously, simply answer, that is molecular blade. Restriction endonuclease is molecular blade. Next question. Restriction enzyme of E. coli are इक्वली प्रोड्यूस करथिबा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो ना कोन एंड तमे जानि परथिबो जेहेतु इक्वली आछि बा इस्चेरिचिया कोलाई आछि तो इस्चेरिचिया कोलाई रु रिलीज करूथिबा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो ना तमे एठी जानि परथिबो हिंट 2 ना बाम एचआई ना दैट इज इको आर ना इको आरआई एंड इको आर 2 कोन आंसर श्रद्धा फाइनली आंसर बी समस्त आंसर बढ़िया आछि विनय ओनली रॉक अंकिता सी राइट इको आर 1 एंड इको आर 2 जेहेतु इस्चेरिया कोलाई देखिछि एंड हम जानिछे द जीनस रो फर्स्ट लेटर रहइबो एंड स्पीशीज रो सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर रहइबो चलो प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन ऑफ बैक्टीरिया एंडो सिम्बायोट ऑफ बैक्टीरिया सेल्स बेस्ड वेक्टर डीएनए ना ऑल ऑफ दिस सौमित्री तृप्तिमय अंकिता चंदन राकेश प्रियंका प्रियांशु अर्चिता श्रद्धा किट्टू कोन आंसर प्लाज्मिड आर extra nuclear gene of bacteria endo symbiote of bacteria cell based vector dna na all of these extra nuclear gene of bacteria na endo symbiote of bacteria cell na based vector na all of these sarthak all of these jo manakar answer all of these the answer is all of these endo symbiote मतलब आमे जानि छी कि जो सेल टा बा जो ऑर्गेनेलिटा गोटे अन्य गोटे सेल भितरे रही परिबो बा गोटे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करि परिबो तो प्लाज्मिड ता तो जदि हम देखिबा दैट इज प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल भितर ही प्रेजेंट अछि तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन ऑफ डी बैक्टीरिया एंड एंडोसिम्बायोट ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड बेस्ट वेक्टर ऑफ डीएनए सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस ठीक अछि द बेस्ट क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी देखो मते फास्ट को व्हाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी रो दीटा प्रिंसिपल कोन एनीवन व्हाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंकिता हरिहर कोन हबो बायोटेक्नोलॉजी रो दीटा प्रिंसिपल कोन व्हाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल कोन पर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी लिखाई छि दीटा प्रिंसिपल कोन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अनदर वन इज बायो प्रोसेस कोन हबो राधे राधे विवेक व्हाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रो दीटा प्रिंसिपल कोन अभिप्सा इक्वली व्हाट आर द टू बायो प्रोसेस इंजीनियर राइट बायोटेक्नोलॉजी रो दीटा प्रिंसिपल मन रखिबो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अनदर वन इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग कोन जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें जानिचे दैट इज गोटे जदि हमर गोटे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें कट करूचे और डीएनए रो सेगमेंट को किछि चेंज करूचे और किछि डिलीट करूचे बा किछि ऐड करूचे बा डीएनए रो सेगमेंट रे एनी चेंज इन द डीएनए सेगमेंट बाय द दैट इज लाइगेटिंग और बाय द डिलीटिंग दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग बा एई सब जेनेटिक इंजीनियरिंग करै पे हमें जो कल्चर मीडिया नउचे तो से कल्चर मीडिया को गोटे स्टेराइल कंडीशन रखिबा बा माइक्रोबियल फ्री रखिया तुम देखिथिबो जोड सब हमर लैबोरेटरी मानकर एक्सपेरिमेंट होउची बा लैबोरेटरी जो जहाँ भी सब ए जो जिनस गुडा कहूची जेनेटिक लेवल रे सब जो माने लैबोरेटरी जो माने सब वर्क करंती से माने पूरा क्लीन थिबे एंड से मानकर मास थिबो एंड कंप्लीटली बॉडी कवर थिबो कारण ताको द्वारा कोनस माइक्रोबियल इन्फेक्शन न हो तो गोटे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करिया दैट इज कॉल्ड एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग so there are two principle of the biotechnology one is genetic engineering and another one is that is bioprocess engineering so strictly मन रखिबो and bioprocess engineering genetic engineering and bioprocess engineering perfect genetic and bioprocess ठीक अछि then मते को that is who was the father of genetic engineering anyone genetic engineering रो father काहा को आछे who was the or who is the father of genetic engineering anyone स्वयं अंकिता लिपिका फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन हबो पॉल बर्ग अनुष्का स्वाति पॉल बर्ग देन मते को दैट इज टू साइंटिस्ट थिले दैट इज हमें जदी कहिया कोहेन एंड बोयर ए दी जण साइंटिस्ट कोन पई नोबेल प्राइज पाइथिले बा हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन कोन पई नोबेल प्राइज पाइथिले कोन हबो हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन कोन पई से मानको नोबेल प्राइज दिया हितला
कार आंसर लिपिका, प्रियांशु, सब्यसाची, सौदामिनी, मिस्टर प्रणव, शर्मिष्ठा। कौन पाई दैट इज टू साइंटिस्ट बोयर एंड स्टानले कोएन बा हर्बर्ट बोयर एंड स्टानले कोएन को दैट इज हमर मिलिथिला प्रोड्यूसर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट इज सी की प्लाज्मिड वेक्टर डिस्कवर्ड बा हमें कहि पारे दैट इज ड्यू टू द डिस्कवर ऑफ द आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कोएन एंड बोयर। जदि हमें कहिया तो दैट इज जो क्लोनिंग प्रोसीजर हो बा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो तांकू बाहर तांकर डिस्कवरीटा जाउतला रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिस्कवरीटा जाउतला बोयर एंड स्टानले कोएन। चलो तो এটা কোন অফ द बेस्ट क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 द बैक्टीरियोफेजेस आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एज बैक्टीरियोफेज को बायोटेक्नोलॉजी रे कोन पई यूज करा जाय प्लाज्मिड वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मधुस्मिता स्मार्ट क्वीन डीपी प्रियंका प्रीति युष्णा हरिहर तृप्ति अनुष्का कौन बताला आंसर बैक्टीरियोफेजेस आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एज वेक्टर ऑफ वेकिल डीएनए क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंथेसर ना नॉन ऑफ दिस हमें जानि छे दैट इज जेमति की प्लाज्मिड को गोटा हमें वेक्टर रूपे यूज करे सेम जस्ट लाइक बैक्टीरियोफेज आल्सो हमें ताको यूज करे छे फॉर द वेक्टर और द वेकिल डीएनए ताले आंसर वेक्टर वेकिल डीएनए जदी हमें देखिबा मोर कॉपी नंबर कोउतरे प्रोड्यूस हुए दैट इज प्लाज्मिड डीएनए और बैक्टीरियोफेज रे तो आंसर इज बैक्टीरियोफेज बा बैक्टीरियोफेज ता बहुत सारा कॉपी नंबर भी प्रोडक्शन करे तो बैक्टीरियोफेज जो माने इंटरेस्टेड थिबो हमर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास रे जॉइन करिया पई तो से माने ऑलरेडी हमें सब क्लास रे कहूचे तो एई क्लास रे कुआ हबो कि तुम मैंने देखी पड़ती स्ट्रिक्टली लिखाई ऑफलाइन रो कोर्स भी केते ऑनलाइन रो केते तो तुम मैंने जदी जो माने जॉइन कर जइसो तो भलो कथा एंड जो माने जॉइन करना दे एंड इंटरेस्टेड अछंती तो से माने आराम से तळे जो नंबर दिया छि से नंबर को कांटेक्ट करिगिरी देन जॉइन करि परिबो एंड जॉइन करले तमरो बेनिफिट ए हबो तुम ऑफलाइन क्लास रे पढिबो देन डेली बेसिस रे एग्जाम देई परिबो एंड तमरो कोन इंप्रूवमेंट होची तो से बेसिस रे डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी रहिबो तो ई सब सुविधा तुमको ऑफलाइन क्लास एंड बोथ ऑनलाइन क्लास रे मिलिबो ठीक अछि। Next, the ability to form tumors is found in plasmid of बढ़िया क्वेश्चन जोटा हमें टीआई प्लाज्मिड बोली कहउचे tumor inducing plasmid is present in the pathogen which cause the कौन आंसर इकोली ना सीडोमोनास ना एगोरबैक्टीरियम ना न्यूमोकोकस तमन्ना लिपिका इंदिरा शुभलक्ष्मी रंजिता वॉइस ऑफ कृष्णा सी एगोरबैक्टीरियम राइट ट्यूमर इंड्यूसिंग बा टीआई प्लाज्मिड एगोरबैक्टीरियम। चलो नेक्स्ट इंजीनियर्ड बैक्टीरियम कैरीज प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीडीएनए ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन आंसर इंजीनियर्ड बैक्टीरियम कैरी बा जो माने मतलब बुझिया दरकार इंजीनियर्ड बैक्टीरियम ता कोन कैरी करछि प्लाज्मिड कैरी करछि ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरी करछि ना सीडीएनए ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन हबो एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन मिस्टर आशीष रिकॉम्बिनेंट डीएनए राइट समथिंग आंसर बी एंड द परफेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस गोटे सिंपली क्वेश्चन पचार दवा फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए करिया पई हमें जानिचे that is I mean when our gene of interest will ligate with the vector DNA recombinant DNA कोचे तो which enzyme help fill बा जो को एंजाइम को हमें molecular glue बोली कोचे क्या होगा सॉरी which enzyme is called the molecular glue बा अठा भलिया की काम करे recombinant DNA फॉर्मेशन पई ligase then मते को polymerase chain reaction बा PCR what are the steps of PCR orderly denaturation then मु फर्स्ट कहि दोची denaturation तापरे what are the steps of PCR बा polymerase chain reaction first process हमें कहि देले denaturation then next one annealing then next one एटा को लास्ट कोन हो denaturation annealing Rakesh perfect denaturation annealing then extension right
डिनेचुरेशन एनिलिन एक्सटेंशन आम जानी डिनेचुरेशन माने डीएनए रो दीटा स्ट्रैंड को सेपरेट करिया बा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करिकरी देन एनिलिन रे दैट इज प्राइमर लगे 3 डेज एंड रे देन से प्राइमर टा एक्सटेंड हो तो बा तीनटा प्रोसेस डिनेचुरेशन एनिलिन एंड एक्सटेंशन नेक्स्ट oncogenic character is seen in oncogenic character by say question that is tumor inducing plasmid oncogenic vector is seen in equally PBR32 TI plasmid ना RI plasmid सार्थक तृप्ति अनिता तमन्ना सौदामिनी स्वाति सुप्रिया अनिता अंकिता सुप्रिया सार्थक राकेश स्वयं लिपिका that is C TI plasmid चलो then the transgenic plants are produced by inserting desired gene in transgenic plants are produced by inserting desired gene in PBR322 TI plasmid lambda phase na none of this कौन हबो गायत्री रंजिता स्मार्ट क्वीन फाइनली आंसर सी हबो कौन हबो आंसर बढ़िया अच्छे समस्त दैट इज टीआई प्लाज्मिड शर्मिष्ठा शुभस्मिता टीआई प्लाज्मिड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए वेक्टर फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पई कोटा गोटे वेक्टर नुह प्लाज्मिड कॉस्मिड फेजेस एंड दैट इज लास्ट वन इज मस्क्यूटो which not a vector for recombinant DNA mosquito is a vector for the disease malaria but which is not a vector for the recombinant DNA technology by कोटा vector no then answer it जाना पड़ी जाउची that is D mosquito अच्छा मते को malaria disease causing organism that is malaria is a protozoan disease ना bacterial disease ना viral disease malaria is a bacterial ना viral or protozoan disease स्टिक टू फाइट डी मस्क्यूटो गायत्री बढ़िया अच्छी सौदामिनी अनुष्का चंदन प्रेम पायल सरोज श्रद्धा किटू भाग्यश्री अनुष्का सुप्रिया ज्योति अभिप्सा शुभलक्ष्मी तृप्ति मिस्टर आशीष ओनली रॉक प्रोटोजोआन सौदामिनी राकेश लिपिका वॉइस ऑफ कृष्णा प्रोटोजोआन दीपांजलि प्रोटोजोआन डिजीज तापर मते को the disease causing organism for the filaria बा filariasis or elephantiasis को disease बा जो filariasis और elephantiasis disease cause करियो organism किए anyone filariasis and or elephantiasis disease causing organism रो name कोन filaria करी filariasis करिबा and also जहा को हम elephantiasis कहउचे बा गोदरा टाइप रो जो हाथी गोड़ टाइप रो कहउचे disease causing organism किए Wucheria bankruptcy and Wucheria malai right Wucheria bankruptcy and Wucheria malai then मते को हमें पढ़ी थिले गोटे ट्रिपल एच बा को तीनटा डिजीज जोटा होची कंप्लीटली क्यूरेबल नुह व्हाट आर द थ्री डिजीज व्हिच आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल एंड हमें ट्रिपल एच कहि कि ताको मन रखिथिले हेपेटाइटिस बी देन जेनिटल हॉप्स देन एचआईवी तीनटा डिजीज से मन रखिथिले ट्रिपल एच कहि कि हेपेटाइटिस बी जेनिटल हॉप्स तो ताको एच रे मन रखिथिले हॉप्स बोली एंड हम आल्सो मन रखिथिले कोन दैट इज एचआईवी बा एड्स एचआईवी जेनिटल हॉप्स एंड हेपेटाइटिस बी भाग्यश्री सरोज तमन्ना सुप्रिया अर्चिता बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रोकन एंड ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर जॉइंटेड बाय Wucheria bankruptcy अमित एस मुस्कान बढ़िया अच्छी गायत्री सौदामिनी रेडी चलो कौन हो नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए लाइगेज परफेक्ट डीएनए लाइगेज व्हिच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ग्लू बिकॉज़ दीटा डीएनए कॉड डीएनए को बा कॉड डीएनए स्ट्रैंड को जोड़े पे हेल्प करे देन मते को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल कॉट व्हिच स्ट्रैंड बा व्हिच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड or glycosidic bond that is what type of bond
will be caught by the restriction enzyme, glycosidic bond or hydrogen bond or that is phosphodiester bond. कौन हबो? Restriction enzyme generally को bond को कट करे, phosphodiester या हाइड्रोजन बॉन्ड या को बॉन्ड को restriction enzyme कट करे. कौन हबो आंसर? Restriction enzyme cut which bond? केते जनकर आंसर आसी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड और केते जनकर आंसर आसी दैट इज बैकबोन ऑफ द डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. चलो नेक्स्ट. Genetic engineering is possible because of the discovery of transduction, transformation, restriction enzyme and DNA ligase ना electron microscopy. कौन हबो? Restriction enzyme genetic engineering is possible because of discovery of. ए क्वेश्चन टा करो तापर मो गोटे क्वेश्चन तुमको हैंड रिटन रे लिखुची. ता पर क्वेश्चन टा एटा दैट इज ऑप्शन 1 एक्सोन्यूक्लियस, बी रे प्रोटीएज, सी रे टैक डीएनए पॉलीमरेज, डी रे काइटिनेज. देन 1 रे रहला पड़े that is cut the end of DNA, double I रे fungal cell wall, C रे stable above 90 डिग्री सेल्सियस. देखो हैंड राइटिंग मार्क करनी कारण क्वेश्चन खाली स्पीड रे लिखा पे एंड तुम रिलेट कर तो cut the end of DNA, fungal cell wall, stable above 90 degree and degradation of protein. आगो भितर दैट इज तमे ए एंड बी बा कॉलम को तमे जोड़ियार अछि. कोन आंसर आउथरे पढि दोछि. एक्सोन्यूक्लियस, प्रोटीएज, टैग डीएनए पॉलीमरेज, काइटिनेज. देन यू हैव टू दैट इज जोड़ियार अछि तुमको कट द एंड ऑफ डीएनए, फंगल सेल वॉल, स्टेबल अबव 90 डिग्री सेल्सियस, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन. ज्योति सी. परफेक्ट यार आंसर सी. डीएनए लाइगेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मानकर सी अछि बढ़िया अछि. रेस्ट्रिक्शन गायत्री, आशीष, राकेश, सी विल बी एट द एंड. फंगल सेल वॉल, काइटिनेज तमन्ना बढ़िया अछि. परफेक्ट. रेडी. चलो आई थिंक समस्त को आसीबो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन. फंगल सेल वॉल, काइटिनेज A1 B3 C2, एक्सोन्यूक्लियस कट द एंड ऑफ डीएनए, काइटिनेज फंगल सेल वॉल, टैग पॉलीमरेज स्टेबल अबव 90 डिग्री सेल्सियस. हम जानि छे दैट इज जो बैक्टीरिया थारो डिस्कवर करा जाय दैट इज मैक्सिमम टेंपरेचर रे सस्टेन करि पारे मैक्सिमम टेंपरेचर प्रोटीएज डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन. चलो next question. Plasmid are suitable vector for the gene cloning because they are smaller circular DNA, they are linear DNA, they can shuttle between prokaryotic and eukaryotic. None of the above. कौन अब आंसर? Plasmids are suitable vector for the gene cloning because they are smaller circular DNA, they have a linear DNA, they can shuttle between prokaryotic and eukaryotic, and none of the above. A answer is A. That is they are smaller circular DNA, so that plasmid are a suitable vector for the gene cloning. Then bacteria possessing restriction endonuclease enzyme remain affected by bacteriophage. Now unaffected by bacteriophage. Bacteria पाखरे थिबा restriction endonuclease enzyme टा बैक्टेरियोफेज टारो कोन होय बैक्टेरियोफेज तक अफेक्टेड करे ना दैट इज अनअफेक्टेड. हम ऑलरेडी पढिले
दैट इज बैक्टीरियोफेज बा दैट इज ए टाइप ऑफ वायरस जेतोले बैक्टीरिया को अफेक्टेड करे तो बैक्टीरिया को जेतोले निजर जेनेटिक मटेरियल बा हम कहि पारे जदी डीएनए टा बैक्टीरिया को इंड्यूस करछि बा बैक्टीरिया रो बॉडी भितर इंसर्ट करछि बैक्टीरिया ता अगेंस्ट रे गोटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोवाइड करे बा रेस्ट्रिक्ट करे बैक्टीरियोफेज रो डीएनए को बाय द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ताले कोन हो अनअफेक्टेड बाय द बैक्टीरियोफेज आंसर बी सब कार affected by bacteriophage bacteria possessing restriction endonuclease enzyme that is कौन करे unaffected by the bacteriophages द्वारा unaffected answer is B not A affected by bacteriophage नहीं not affected by the bacteriophage voice of Krishna B perfect right unattacked by the bacteriophage बा bacteriophage ताको अटैक करि परिबोनी सेति पई तो bacteriophage रो डीएनए को तो रेस्ट्रिक्ट करिया पई ता पाखरे एंजाइम अछि तो पुणी केमते bacteriophage ताको अटैक करि परिबो बैक्टीरियोफेज बा भाइरस ताको अटैक करि परिबो नाही बोली बा ता अगेंस्ट रे से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करछि बा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करछि तो पुणी केमते बैक्टीरियोफेज ताको अफेक्टेड करिवो ठीक अछि नेक्स्ट restriction endonuclease causes double strand DNA single stranded of double strand DNA both A and C तृप्तिमयी सॉरी सर इट्स ओके खुशी स्वान स्वयं सोम स्वाति प्रियंका स्मार्ट क्वीन डीपी सरोज या परे आई थिंक तमरो रहइबो 25 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन है तमरो लास्ट क्वेश्चन रहइबो 25 क्वेश्चन तम पे होमवर्क टिके एक्चुअली टिके हेल्थ इश्यू पई नले क्लास को हम अधिक कंटिन्यू करथांते टिके देह खराब होची बोली हम ट्राई करिया जल्दी सारिया पई आ बाकी रहइला ई जो चैप्टर रो आहुरी कांसेप्चुअल क्वेश्चन प्लस आरे जो रहिला हमरो एप्लीकेशन पार्ट बा जो हमरो सेकंड पार्ट रहिला बायोटेक्नोलॉजी रो तो सेही पार्ट जेतोल आनिया तो ताकू एंड यार कांसेप्चुअल क्वेश्चन मिसई करिया देन ए बायोटेक्नोलॉजी रो सरी गला परे जनरली हमें चैप्टर आनिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिसई करी ठीक अछि कोन आंसर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ना डी बोथ A and both B and C restriction endonuclease caught double stranded DNA single stranded DNA restriction endonuclease general double stranded DNA को कट करे and restriction जदि पचारिबो restriction endonuclease can cut जदि पचारिबो double stranded and single stranded को काटी परिबो पर restriction endonuclease generally काहे काटे double stranded DNA को काटे ताले ए हमें कहले अप्रोक्सीमेटली ठीक हेबो then genes for antibiotic resistance are located in antibiotic को रेजिस्टेंस करिया पे जो जीन बा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ता कोतरे थाए देखो जनरली एंटीबायोटिक सब कोन कोन जी होची बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करो जेमते एम्पिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन आल्सो एंटीबायोटिक कोन जी होची बैक्टीरियल ग्रो को प्रिवेंट करे बा जदी कोनोसी बैक्टीरिया आसीबो तो बैक्टीरिया को किल करे पे एंटीबायोटिक जनरली खाए जदी किछि बैक्टीरियल डिजीज होची देन डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करंती बट जीन्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बा ए एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करिया पे प्लाज्मिड बा वेक्टर पाखरे हमें जानि छे PBR322 या पाखरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अछि गोटे होची एम्पिसिलिन सपोज दिस इज द एम्पिसिलिन एंड अनदर वन इज टेट्रासाइक्लिन बा जदी हमें देखिया एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करिया पई बा आ पाखरे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अछि जे कि जदी आको एम्पिसिलिन किछि भी करि परिबोनी बा एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किछि करि परिबोनी कोन पई ना बिकॉज़ या पाखरे छै एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंस करिया पई जीन सेमति टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अछि PBR322 पई दैट इज कोन करिवो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक भी किछि करि परिबोनी जेतु ता पाखरे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अछि तो आंसर कौन होबो जीन्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लोकेटेड इन द दैट इज प्लाज्मिड एंड हम जानि छे मेसोजोम इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया तो एटा हमर लास्ट क्वेश्चन 25 प्लाज्मिड आंसर ठीक अछि परफेक्ट प्लाज्मिड आंसर प्लाज्मिड 67 वाचिंग किंतु वीडियो लाइक हेची दैट इज 39 वाह इते अधिक लाइक तो एटा हमर 25 रहइबो लास्ट क्वेश्चन स्टिक टू फाइट बी ऑल ऑफ द अबव एटा तमर रहइबो होमवर्क फॉर तमे एटा कमेंट रे जणेबो देन बाकी रहला हमें नेक्स्ट क्लास रे यार सेकंड पार्ट आनी करे आसिया दिकू तमन्ना थैंक यू अभिप्सा एंड थैंक यू डिकू यादव
चलो प्रियांशु, प्रीति ज्योत्सना, डी तृप्तिमयी, तृप्ति, विनय, रंजिता 40 हैला सर। ठीक अछि तो नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन करिया ना बायोटेक्नोलॉजी रो जो हमें सेकंड पार्ट आनि के आसीबा आ टिके क्वेश्चन आनि के आसीबा देन बाकी रहला जतले बायोटेक्नोलॉजी सरी जीवो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो ताकू नै कि टिके टॉप लेवल रो क्वेश्चन आनिया देखो मु जनरली कहूचे हमें जो ए फेज जोडा करी करी जाउचे तमर एग्जाम पूर्वरु जून 4 एंड 6 सॉरी तो जो एग्जाम तमर रहिला तो सेही एग्जाम बेलकू जनरली आम आर आउ थे थे टपिक को रैपिड फायर करिया बा रैपिड फायर माने जो चैप्टर गुडा सरी तो ताकू नै कि गोटे मिक्सअप करी चैप्टर गुडा आनिया ठीक अछि तो सेही अनुसार सब चैप्टर जोडा सरी सरी जाउची काले से गुडा अगेन न भूलिबो तो ताकू भी हमें अगेन रिवाइज करिया पे रैपिड फायर आनिया जेमति कि हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिसे के आनिबा देन हमें आल्सो ह्यूमन फिजियोलॉजी को गोटे थरा आनिबा देन हमें जो हमें सरी जाइची जोटा हमर दैट इज डिजीज चैप्टर तो डिजीज चैप्टर को आ गोटे चैप्टर मिक्सअप करी आनिया एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड आर बायोटेक्नोलॉजी रो पार्ट 2 जोटा एप्लीकेशन रहला तमरो जदि जो आर सेकंड पार्ट तो ताकू नै कि आनिबा डिकू थैंक यू रिपोर्ट हेल्थ आपण को फैन हे गली थैंक यू सर जय श्री राम जय श्री जगन्नाथ प्रियांशु तृप्ति शुभलक्ष्मी बिंदु गीतांजलि अर्चिता तमन्ना सुप्रिया मधुस्मिता स्वाति सौदामिनी अर्चिता श्रद्धा किटू गायत्री मिस्टर आशीष चंदन तमन्ना सर न्यू स्टूडेंट थैंक यू देन क्लास तमरो ए टाइम रे रहइबो 6टा टाइम रे रुहे जूलॉजी क्लास देन बॉटनी क्लास तमरो मैक्सिमम 12टा बेले रहि जाउची एंड फिजिक्स क्लास भी तमरो से 12टा बेले रहि जाउची तो फिजिक्स क्लास भी तुम देखि परिबो बॉटनी भी देखि परिबो तो चाहि कि चैनल रे तुम देखो प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो देन जदि भल लागिबो एंड इंटरेस्टेड थिबो दैट इज टू जॉइन आवर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास देन जॉइन करियर प्रोसीजर भी तुम जणा थिबो तळे जो गूगल फॉर्म दिया होची से गूगल फॉर्म को तुम फिल अप करिवो सेते कंप्लीटली तुमरो ना एड्रेस जहा भी जो थिबो तुम फिल अप कला परे देन कांटेक्ट करा जिवो देन तुम एनरोल करि परिबो एंड जदि एनरोल न करचो भी देन ऑनलाइन क्लास आज यूजुअल हमें जोडा लाइव क्लास करछे क्वेश्चन प्रैक्टिस करछे देन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करि परिबो एंड घरे निजेर सेल्फ स्टडी भी करि परिबो सेल्फ स्टडी करि करी भी एठी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो एमति नाही कि तमे केवल एठी ही एनरोल करले बा ऑफलाइन या ऑनलाइन पढिले पढियो बट तुमको गोटे प्लेटफॉर्म मिलिवो एंड भलो प्लेटफॉर्म मिलिवो देन तुम चॉइस तुम सेल्फ स्टडी करि परिबो एंड आल्सो प्रिपरेशन भी हे परिबो सुप्रिया जय जगन्नाथ स्वयं तो एई रहला चैप्टर बाकी रहला नेक्स्ट क्लास रे हमें आ किसी चैप्टर नो आनी करी आसीबा देन जा कहले रैपिड फायर एंड जो टाइप रो प्रोसीजर होबा कथा चले ठीक अछि तो गुड नाइट एवरीवन आपण क्लास देखि लागिला योर मु सियोर स्टेट बीडी एंट्रेंस पई स्टेट बीडी पई प्रिपेयर होचो जदी हमर भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पई इंटीग्रेटेड बीडी जो रहला तो सेही कोर्स भी दिया होची यदि इंटरेस्ट अच्छो देन जॉइन करि परियो ठीक अछि धन्यवाद वॉइस ऑफ कृष्णा थैंक यू सौम्यात्री संजय थैंक यू एवरीवन चलो सर फिजिक्स क्लास नंबर 12 टा होची ना फिजिक्स क्लास 12 टा रे पन्नजा मैम करो फिजिक्स क्लास तमर से आफ्टरनून रे होची हो देखि परिबो चैनल सब्सक्रिप्शन करिकि चलो अंकिता थैंक यू अंकिता स्मार्ट क्वीन डीपी सरोज अमित हां सर जॉइन ठीक अछि गूगल फॉर्म फिल अप कर दो देन हे जिवो पेड ग्रुप हां पेड ग्रुप अछि एते भी फीस हाई नाही तो थरे तमे कांटेक्ट करि परिबो नंबर कांटेक्ट अछि थरे कांटेक्ट करो जदी ठीक ठाक लागिवो देन जॉइन करिवो चलो थैंक यू स्वयं चलो